Welcome back to our lecture series of metric spaces. In this lecture, we are going to discuss continuous mapping on compact spaces. हमने अभी तक कॉम्पैक्ट स्पेस की वेरियस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कॉम्पैक्टनेस को कंटिन्यूस फंक्शंस के थ्रू स्टडी करने वाले हैं. एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि कंटेंट वाइज हमारे लिए इस पेपर का ये लास्ट लेक्चर है. इसके बाद आपको जो प्रीवियस इसके क्वेश्चंस पेपर हैं उनकी सॉल्व्ड पीडीएफ आपको मिलेगी इन डिटेल्ड वे. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू discuss any of the answer or any of the explanation, feel free to contact us. Now let us start this lecture by writing a theorem 5.3.1. okay, and it says let f be a continuous function from a compact metric space x comma dx to into a metric space y comma dy. Then the range f of x of f is also compact, right? तो बेसिकली किसी भी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस की कॉन्टिन्यूस इमेज भी कॉम्पैक्ट होती है. दिस इज व्हाट दिस थ्योरम वांट टू से. ओके, सो लेट अस आइडेंटिफाई द प्रूफ ऑफ दिस. यहाँ पर अगर हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू हो जाए तो उस केस में दिस रेंज एफ ऑफ एक्स बिकम्स वाई ओनली. तो हम अगर यहाँ पर ये ऐड कर दें दैट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी एक्स ऑन टू अ मैट्रिक स्पेस वाई कॉमा डी वाई. देन अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो उस केस में एफ ऑन टू होने के कारण वाई भी एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस बनेगा. okay, so let us identify the proof of this particular in the absence of ontoness of the function f. now हमने इस एफ ऑफ एक्स को कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है और कॉम्पैक्ट के लिए वी नीड टू अज्यूम सम ओपन कवरिंग एंड देन नीड टू डिटरमाइन अ फाइनाइट सब कवर. okay, so we will proceed in that way. So let f be a continuous function from a compact metric space x comma dx into a metric space y comma dy. ओके, अब हमने प्रूफ करना है दैट रेंज एफ ऑफ एक्स इज कॉम्पैक्ट. सो फॉर दैट पर्पस टू शो दैट f of x is compact, we shall show that every open covering of f of x has a finite subcover. Actually this is the definition of compactness. तो हमने क्या करना है, बस इसका एक ओपन कवर अज्यूम करना है और उस ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस
let z lambda where this lambda is coming from this capital lambda. Okay, this is indexing set. तो हम कह रहे हैं जैसे जैसे लेमडा इस सेट पर वेरी करेगा वैसे वैसे हमें जी लेमडा मिलता जाएगा एंड इसी सेट को वी आर कॉलिंग बी एन ओपन कवरिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम कहेंगे कि इस ओपन कवर का कोई फाइनाइट सब कवर भी अवेलेबल है इन दिस सिचुएशन वेयर दिस एक्स इज अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस। ओके, and this function f is continuous. Okay, so now since f is continuous, so we know that under the continuous function inverse image of an open set is open and inverse image of a closed set is also closed, right? So since we are having the open sets in the covering, so we will identify the inverse image क्योंकि ये जो कवरिंग है वो y में है, दैट्स व्हाई वी आर identifying the inverse image, right? Since f is continuous, therefore f inverse of z lambda is open in x. Okay, पर्टिकुलरली ये जो सिनेरियो है वो हमारे पास ऐसा है, सपोज दिस इज आर एक्स एंड समवेयर दिस इज आर वाई एंड इन वाई क्योंकि हमने ऑन टू की बात नहीं की है तो सपोज दिस इज आर एफ ऑफ एक्स और इसकी ही हमने कोई एक कवरिंग आइडेंटिफाई की है, दिस इज आर जी लेमडा। ये सभी ओपन सेट हैं, ठीक है, सभी इसको कवर कर रहे हैं, right? So this is the open covering of f of x. Now you are suppose choosing some particular, not particular, so that you can visualize this mapping. Suppose this is our open set, some open set, ठीक है, this is our z lambda. अब हम जो फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम x to y, दिस इज आवर फंक्शन f एंड दिस इज continuous and this x is compact, right? अब हम हमारे पास क्या सिचुएशन है कि जब f डिफाइंड है x टू y और f कंटिन्यूस है तो इन यहाँ पर जब भी हम ओपन सेट लेंगे तो उसकी इन्वर्स इमेज x में ओपन होगी और यहाँ से जब हम क्लोज्ड सेट लेंगे तो उनकी f इन्वर्स इमेज भी x में क्लोज्ड होगी। नाउ यू आर कंसिडरिंग दिस z लेमडा, अगर आप इसकी f इन्वर्स इमेज आइडेंटिफाई करेंगे तो x में एक ओपन सेट होगा क्योंकि दिस z लेमडा इज एन ओपन सेट इन y। ओके, नाउ अगर हम इन सारे ओपन सेट्स की बात करें क्योंकि ये कंप्लीट इमेज है, ये पूरे के पूरे x की इमेज है, इसका मतलब जब भी आप यहाँ से कोई एक x चूज करेंगे उस x की f इमेज हमेशा इस रेट f ऑफ x सेट में ही जाएगी, राइट? क्योंकि ये पूरी रेंज को ही डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी हम यहाँ से एक ओपन सेट लेंगे वो इस x में जो ओपन सेट बनेगा और इन सारे इस तरीके के ओपन सेट को कलेक्ट करेंगे तो दैट विल बी एन ओपन कवरिंग फॉर दिस x। ओके, और x कॉम्पैक्ट है तो उस ओपन कवरिंग का एक फाइनाइट सब कवर होगा, उस फाइनाइट सब कवर की फिर से हम f इमेज आइडेंटिफाई करेंगे तो वो इस f ऑफ x का एक फाइनाइट कवर बनेगा और साथ ही साथ ये जो पहले हमारे पास कवरिंग थी इसका सब कवर बनेगा और उस केस में हमारा एफ एक्स एक कॉम्पैक्ट स्पेस बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रूफ। नाउ लेट अस राइट दैट हमने सभी इनवर्स इमेजेस आइडेंटिफाई कर लिए। ओके, मोरोवर the set f inverse of z lambda where this lambda coming from the indexing set lambda is an open covering of x। ये क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि f कंटिन्यूस फंक्शन है
तो एफ इनवर्स हमेशा एफ इनवर्स ऑफ ओपन सेट ही बनेगा, तभी हम इसे ओपन कवरिंग कह पा रहे हैं। और जो ये जी लेमडा है वो कवरिंग है कंप्लीट रेंज की, तो वी आर श्योर कि जो भी यहाँ पर हमें इस तरीके के ओपन सेट मिलेंगे वो एक्स को कवर करेंगे ही करेंगे। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज एन ओपन कवरिंग ऑफ एक्स। ओके, नाउ वी हैव दैट since x is compact. Okay, so there is some finite subcovering of x। ठीक है, फाइनाइट सब कवरिंग मतलब ये जो लेमडा है वो किसी पर्टिकुलर रेंज तक ही होंगे। दैट इज there exist some lambda 1, lambda 2 and so on, lambda n in this lambda such that we can say that the union of, क्योंकि जितने भी ओपन सेट हैं यहाँ पर उनकी इनवर्स इमेज इस x में ही लाई करेगी, और उनका जब हम यूनियन लेंगे तब भी वो x में ही लाई करेगा। तो अगर हम कह सकते हैं कि x कंटेंड इन द यूनियन ऑफ ओपन सेट दैट आर कमिंग फ्रॉम द इनवर्स इमेजेस, तो वो दोनों इक्वल ही हो जाएंगे, है ना। सच दैट दिस x is equals to the union of I running from 1 to n and f inverse of z lambda I। ओके, क्योंकि ये वाला जो सिनेरियो है ना वो तुम्हारे पास था, यूनियन I रनिंग फ्रॉम 1 to n f इनवर्स z lambda I दैट कंटेंट इन x, ये तुम्हारे पास था ही। अब x अगर ओपन x के लिए ये ओपन कवरिंग है तो x इसका सबसेट बनेगा, और जब जैसे ही x इसका सबसेट बनेगा इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर इक्वलिटी इन प्लेस ऑफ दिस इंक्लूजन। नाउ यू कैन सी, अगर हमने भी कहा था कि हम सबसे पहले ओपन कवरिंग देखेंगे, फिर हर एक ओपन सेट की एफ इनवर्स इमेज आइडेंटिफाई करेंगे, वो उन सभी का यूनियन जब लेंगे तो एक्स का एक ओपन कवर होगा, एक्स कॉम्पैक्ट है तो उस कवर का एक फाइनाइट सब कवर होगा, और उस फाइनाइट सब कवर की हम फिर से एफ इमेज आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास रहा फाइनाइट सब कवर। नाउ जस्ट आइडेंटिफाई दी it's a f image only। okay, so now you can say, now what about f of x? F of x that is equals to f of, now in place of x you can write this union I running from 1 to n f inverse of z lambda I। okay, now we know that the f is continuous, f image of union of any finite number of sets is the union of f image of the odd sets। okay, that is what I want to say, that f of a union b is equals to f of a union f of b, or you can say this is the union of f of a A1 और A2 हो तो आप कह सकते हैं कि A1 A2 A3 ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, f image of union is equals to the union of f images, right? So I can say this is equals to the union I running from 1 to n f image of this set f inverse z lambda I, and of course this is equals to union of I running from 1 to n f inverse z lambda I। now from the concept, from the continuous mapping हमने ये देखा था that this set is contained in union I running from 1 to n z lambda I। ठीक है, and which is showing that is f of x is contained in the union I running from 1 to n z lambda I, which is of course a subset of z lambda, where lambda is coming from this
indexing set. So basically this provides us a finite subcover of this open cover. Okay, so there is a finite subcovering of f of x. So thus f of x is compact. ठीक है? Now let me write a note here that if f is onto, then f of x is equals to y. Okay, और इस केस में and in this case continuous onto image of compact space is compact, right?